Yes. Anyone who remembers anything, any point, one point which you remember from the last week's discussion? Prabhuji, I remembered one point that you have illustrated with the scientific reason that Einstein was showing the solar system, that how the solar system is binded, and one of his colleague was raising the question. So he simply quoted the thing that if the solar system is being binded so peacefully, and to understand this, we are discovering it and not inventing it. To how the God exists. So I remember that, Prabhuji. Yes, that is right. Thank you for sharing that. That was Ankita. Okay. Yeah, we shared the story of Sir Isaac Newton. He had a conversation with a friend, and there was a model of the solar system. And the Newton mentioned to his friend that the friend was atheist, and Newton mentioned that if you think this cheap imitation solar system, a plastic and paper solar system, requires uh, an intelligent person to build it, very good craftsmanship is required to build this. So why do you think the original solar system, which is such complex machinery, has come on its own? Right? That was the argument Newton had thrown to his friend, and his friend agreed to it. He said that yes, I agree now that there must be some superpower, there must be some super intelligent being who is controlling the affairs of this universe. Anyone else, please, quickly, so that we can jump on to today's discussion. Okay, I'll try to give a. I'll ask another question. After attending the last week's discussion, have you observed, has your perspective of observing the world around you has changed? Have you observed something which strengthens your understanding, strengthens your faith in God? We had covered so many examples in our discussions, right? We had taken the example of a flower, a plastic flower, and the real flower. We had taken an example of a very nice painting, the painting created by Leonardo da Vinci, right? The Mona Lisa painting. And then we had talked about the natural landscapes which are there in the nature, right? If a work of art requires a very intelligent artist, then what about the natural art which exists in the world around us, right? Is there anyone in this forum who is not comfortable with English? No, sir. Okay. Is okay. Mukesh is mentioning one person is looking for Hindi. Okay, I will try to speak little bit in Hindi in between. थोड़ा थोड़ा बीच में हिंदी में बोलने का प्रयास करता हूं मैं. हमने बहुत सारे उदाहरण लिए थे पिछले डिस्कशन में कि कैसे हम साइंटिफिकली और लॉजिकली कोई तो सुपर कंट्रोलर, कोई तो सुपर पावर है इस संसार को चलाने के लिए, उनको हम गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं. तो तो हमने आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया, अभी कुछ आपने सोचा कि हाँ मुझे ये कारण है, ये एक लॉजिकल कारण हो मेरे लिए है कि मैं ये कह सकता हूँ या कह सकती हूँ कि भगवान हैं. ये एक काम जो है वो एक इंटेलिजेंट, एक सुपर पावर के बिना नहीं हो सकता है. एनीथिंग लाइक दैट यू ऑब्जर्व्ड? समबडी Yes, एल्स हु Prabhuji. हैज? हाँ, Prabhuji, I have observed few things. ओके, Um, प्लीज मेंशन वन आउट ऑफ ऑल uh, दोस few. Prabhuji, I often mull or I often introspect whenever before coming into this Krishna consciousness also. I often introspect that ki how the beautiful flowers or how so many varieties of क्या कहते हैं, living beings are there, and how the digestive system and how the metabolism goes through, like fish, and so many animals or so many foods are there which we don't know, but still how the solar system and how the ecology works. So I often introspect how it works, and so amazingly it works. So it helps me to understand that ki still God, some power is there which is controlling all the things. So I often introspect on this topic. Okay, thank you Ankita for that. Yeah, so see,
देयर आर टू थिंग्स हियर विच वी आर टॉकिंग अबाउट। हम दो विषयों के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, साइंस, वन इज साइंस, वन इज स्पिरिचुअलिटी। ओके, एक है विज्ञान और एक है अध्यात्म। साइंस जो है विज्ञान, इट डील्स विद द नॉलेज एक्वायर्ड बाय सेंसेस। हमारी इंद्रियों से हमें जो ज्ञान मिलता है, हम उसके ऊपर हमारी लर्निंग्स, हम हमारी इंद्रियों के ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं हमारे लर्निंग्स के लिए। और अध्यात्म जो है, स्पिरिचुअलिटी, उसके ऊपर हम निर्भर करते हैं स्क्रिप्चर्स पे, शास्त्रों पे। सो लेकिन कभी कभी ऐसा समझा जाता है कि विज्ञान में हमें फेथ की जरूरत नहीं होती है, हमें अध्यात्म के अंदर बहुत फेथ रखना पड़ता है। स्पिरिचुअलिटी की बात में, रिलीजन पे, इन पे सब पे हम फेथ रखते हैं, जो कि ब्लाइंड फेथ होता है, अंधा विश्वास होता है। इसके कारण हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते। और विज्ञान जो है वो तथ्यों पे आधारित है। विज्ञान हमें एम्पिरिकल एविडेंसेस देती है, प्रमाण देती है हर बात के, इसलिए हम विज्ञान पे अधिक भरोसा करते हैं। तो एक ये अवधारणा जो हमारी है, ये मिथ है, ये गलत अवधारणा है। मैं अभी उसके बारे में 2 मिनट चर्चा करूंगा क्यों ये गलत है। हम साइंस, विज्ञान भी हमारा फेथ पे, अंधे विश्वास पे आधारित है। ऐसा क्यों है? और बाय द वे, वी आर नॉट अगेंस्ट साइंस। हम विज्ञान और अध्यात्म को ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमें विज्ञान से दूर जाना चाहिए और अध्यात्म को पकड़ना चाहिए, फिर अध्यात्म से दूर जाना चाहिए, विज्ञान को पकड़ना चाहिए। हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना है, हमें दोनों को साथ में लेके चलना है। हम अंधा विश्वास विज्ञान पे भी अच्छा नहीं है और अंधा विश्वास अध्यात्म में भी अच्छा नहीं। तो अंधा विश्वास कैसे है हमारा विज्ञान के प्रति? जैसे विज्ञान में एक सिंपल सा उदाहरण हम लेंगे। बोला जाता है कि मैथमेटिक्स, राइट, मैथ्स, गणित में ऐसा कहा जाता है, परिभाषा आती है बिंदु, पॉइंट। व्हाट इज अ पॉइंट? पॉइंट इज समथिंग व्हिच डज नॉट हैव एनी डायमेंशन। एक बिंदु एक ऐसी अ, एक ऐसी ज्यामिति है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई जिसको हम नाप नहीं सकते मैथमेटिकली, एंड सो ऑन। और रेखा, लाइन कैसे बनती है? इफ वी कलेक्ट सो मेनी पॉइंट्स, देन इट बिकम्स लाइन। हम बहुत सारे बिंदुओं को एक साथ अरेंज करते हैं तो उससे रेखा बनती है, लाइन बनती है। तो जो बिंदु है उसका कोई डायमेंशन नहीं है, उसको मैथमेटिकली प्रूव भी नहीं किया सकता है, उसका कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन रेखा जो है, उन बहुत सारे बिंदुओं से बनकर मिली हुई जो रेखा है, उसका साइज भी है, उसका प्रमाण भी है, उसको हम देख भी सकते हैं, उसको हम पॉइंट भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बिंदु जो है वो एक एक अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ बताया गया है, ये एक अवधारणा बनाई गई है कि बिंदु को समझना है, सिर्फ हम बिंदु को प्रूव नहीं कर सकते, उसको समझना है। उस समझ के साथ में आगे बढ़ेंगे तो हम रेखा भी समझेंगे, हम सर्कल भी समझेंगे, हम रेक्टेंगल भी समझ जाएंगे। सिमिलरली अध्यात्म में भी ऐसा होता है। कुछ ना कुछ एक्सोमेटिक ट्रूथ्स हमें दिए होते हैं, कुछ हमें फंडामेंटल ट्रूथ्स दिए होते हैं, हमें उनको पकड़ के चलना होता है। फिर हम उसके आगे चलते हैं, हम एनालिसिस करते हैं और फिर उससे जो रिजल्ट निकलता है उससे वो प्रूव हो जाता है। सो both science and spirituality, they all they both of them require faith. अभी किसने जाना है? एक हमारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, G इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण का उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, फिजिक्स में आता है ये। G का वैल्यू है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आज तक IIT बॉम्बे में मेरा एक फ्रेंड पढ़ता था कुछ समय पहले, हाँ, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा उपकरण हमने विदेश से हमारे कॉलेज में आया, फिजिक्स लैब में, जी का वैल्यू मेजर करने के लिए। पूरे बैच में से कोई भी जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उस मशीन को यूज करके नहीं निकाल पाया। किसी का 15 आया, किसी का 5 आया, किसी का 28, किसी का 80, 100, वेरी वेरिंग नंबर्स पीपल गॉट। Professor also could not get 9.8 meters per second square. Lab assistant also could not get. तो 9.8 फिर भी हम मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? टीचर ने बोला, प्रोफेसर ने बोला कि देखो तुम न्यूटन के पिताजी मत बनो, 9.8 बोला है तो 9.8 ही लिखना है, चाहे तुम्हारी गणना कितनी भी आए। सो हम फेथ लेके चल रहे हैं कि हाँ, मैंने नहीं देखा है लेकिन किसी विद्वान ने देखा है, किसी विद्वान ने जाना है 9.8, तो मुझे उसको लेके चलना है।
और फिर मैं कुछ इक्वेशंस को यूज करूंगा, फिर मैं कुछ डिस्कवरीज आगे करूंगा, उससे ये वापस प्रूव हो जाएगा। तो सिमिलरली ये जो दो प्रश्न हैं हमने पिछले सत्र में रखे थे, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कैसे बना, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस यूनिवर्स, कि इसका बनाने का या इसका इस यूनिवर्स का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, कारण क्या है। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर साइंस भी खोजने के प्रयास कर रही है और अध्यात्म भी। विद स्पिरिचुअलिटी साइंस बोथ आर ट्राइंग टू figure out the answers to these questions. Science is relying on the senses, spirituality is relying on the higher subject matters like Bhagavad Gita. Okay, so now we will we had taken so many examples in the last discussion. Okay, design, हमें बहुत अच्छा डिजाइन जब हमें देखने को मिलता है तो उसके लिए कोई ना कोई डिजाइनर चाहिए। तो वैसे ही इस संसार में बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन देखने को मिलते हैं। लेट मी show you a couple of slides from the last time. Okay, so we had taken this example of NASA. एक सैटेलाइट को भेजने के लिए, मॉनिटर करने के लिए बहुत बहुत मेहनत लगती है नासा को, और हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ अराउंड द सन, उसको कोई मैनेज नहीं कर रहा है, वो कैसे अपने आप चल रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, एंड द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स, उनका ट्रैफिक कौन मैनेज करता है। वी हैव ह्यूमन ब्रेन विच इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। Who has created this supercomputer? Because every laptop and computer and smartphone requires very intelligent engineers to work together. Okay, we see so many wonderful things around us. Everything requires a creator, an engineer, a sculpture, right? Then what about the universe? So Einstein had said there is a perfect brain behind all the natural physical laws. Lord Kelvin said if you think strongly enough, you will be forced by science to believe in God. So this is the story of Isaac Newton we had discussed. See, अभी हमने academics में पढ़ा है दो तरह की चीजें. Oh wait, I had stopped sharing. I'm sorry. Yeah, so I'm sorry, I skipped through the slides without sharing. So we had seen all these examples, right? Satellite, NASA, brain, and so many objects, and scientists, quotes of scientists, Einstein, Kelvin, and many others, right? So this is the story of Newton. So in the academics we have studied two kinds of theories. एक हमने चांस थ्योरी पढ़ा है, एक हमने बिग बैंग थ्योरी पढ़ा है क्रिएशन के लिए, ये यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ. Maybe there was a, so that one scientist has said there is a, with random events of chance the universe has come about, the life has come about, and so on. So another scientist had commented on this chance theory कि अगर सब कुछ बाय चांस आ गया है नेचर में, अपने आप आ गया है किसी के बनाए बिना, तो इसका मतलब ये कि आपकी जो थ्योरी है चांस थ्योरी, ये भी अपने आप कहीं से आ गई है. तो अगर ये थ्योरी कहीं से अपने आप आ गई है तो फिर आपको कोई प्राइज नहीं मिलना चाहिए, आपको नोबेल प्राइज और ये प्राइज, साइंटिफिक डिस्कवरीज अवार्ड, ये सब आपको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपने तो मेहनत नहीं की है इस थ्योरी को प्रेजेंट करने के लिए. सो लाइक दैट, सो इफ दिस पर्सन सेइंग कि संसार में सब कुछ तो बाई चांस आया है और मेरी थ्योरी मैंने क्रिएट करके प्रेजेंट की है, तो इट्स अ प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि फिर तो आप थ्योरी ही गलत हो गई. दूसरा एक है बिग बैंग थ्योरी. इट्स अ वेरी फेमस साइंटिफिक थ्योरी, बट इट्स अ थ्योरी. सो वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, आज तक कोई भी जो ये थ्योरीज हैं, ये संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसको सभी वैज्ञानिकों ने अप्रूव नहीं किया है. दीज आर द थ्योरीज प्रेजेंटेड.
थ्योरी का मतलब क्या होता है कि एक अवमानना दी है एक साइंटिस्ट ने कि मेरे अनुसार ये ऐसा हुआ होगा। किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है ऐसा, और प्रमाण अभी ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, इट्स अवर मिसफॉर्च्यून दैट our academics are presenting these theories as if they are true, as if they have been proven. Hmm? There is so much revolution going on in the Western countries even today. People are actually putting cases in the courts that we do not want to study these theories anymore. ये हमने पढ़ लिया है, और 50 साल 100 साल से ये थ्योरीज हम पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक इसका कुछ प्रमाण नहीं मिला है। सो यू गिव अस अल्टरनेट थ्योरीज। हमें थ्योरी ऑफ क्रिएशन पढ़ाइए, व्हाट इज द अल्टरनेट व्यू पॉइंट, व्हाट इज द स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट। लाइक दैट देयर आर केसेस गोइंग ऑन द यूनिवर्सिटीज। सो बिग बैंग थ्योरी क्या है? मैं आप में से किसी से प्रश्न पूछता हूं, एनीवन हु कैन आंसर। आपको एक न्यूज सुनाई आपने, आज रात को न्यूज में आप सुने, लेट्स से, ऐसा कामना करते हैं कि ऐसा न्यूज ना सुनाई पड़े, लेकिन उदाहरण के तौर पर अगर आपने ऐसी न्यूज सुनी कि आज कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जैसे अभी इंडिया से बाहर विदेश में, कहीं फ्रांस में या जर्मनी में, राइट, देयर इज अ टेररिस्ट, देयर वाज अ टेररिस्ट अटैक रिसेंटली। तो वैसे अगर आपको सुना, एक न्यूज पता चले कि कहीं पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो कौन कौन से प्रश्न आपके मन में आएंगे उस बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर? क्या क्या हुआ होगा उस बॉम्ब ब्लास्ट में? एनीवन हु कैन आंसर? Any one question or two questions which come to your mind when you hear a news, bad news about a bomb blast? How many terrorists were there? How many terrorists were there? That was Arushi. Yes. Okay, thank you, Arushi. So some terrorists may have been there who have caused this bomb blast. Okay, somebody else, what other questions will come? How many people have died over there? How many people have died? Yes, that is right. Thank you, Ankita. Anyone else? कितने जान माल को कितनी हानि हुई है, कितने लोग मरे हैं, हाँ, क्या और नुकसान वहां पे हुआ है? और कोई प्रश्न? क्या किसी के मन में ये प्रश्न आएगा? Where did it happen? यस, बैड बॉय, व्हाट इज आंसर? Where did it happen exactly? नो, आई कुड नॉट हियर यू, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। कैन यू पुट इट ऑन द चैट? या which terrorist organization is behind it? Yes, yes. लेकिन आप में से किसी के मन में भी क्या ये प्रश्न आएगा, विल यू थिंक दैट ओ सो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, मे बी आई विल चेक, आई विल गो एंड चेक आफ्टर 2 days, मैं 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जाके देखूंगा। There is some noise on the bridge. क्या किसी के मन में ऐसा प्रश्न आएगा कि 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद या कुछ दिनों के बाद मैं जाके देखूंगा, और वहां पे क्या पता कुछ मुझे कोई और एक कोई अच्छी चीज मुझे मिल जाए, कुछ अच्छी चीज की वहां पे उत्पत्ति हो गई हो, कुछ डायमंड वहां मिले, या कुछ कोई बिल्डिंग वहां पे अपने आप बन गई हो? ऐसा कभी आपके मन में आएगा प्रश्न एक बॉम्ब ब्लास्ट से? नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, राइट? ऐसा कभी भी हमारे मन में नहीं आएगा। लेकिन जब बिग बैंग की बात बताई जाती है, जब बिग बैंग मतलब क्या, एक there was one point, some scientists say that there was one point in the universe which was so dense, which was so intense, कि उसका डेंसिटी एंड टेम्परेचर इनफाइनाइट था। उसको फिजिकली हम फिजिकली अनरिलेटेबल, अनरिलायबल, एंड मैथमेटिकली उसको हम प्रूव नहीं कर सकते। इतना एक पॉइंट में एक बैंग हुआ, एक ब्लास्ट हुआ, और उससे ये बहुत ही सुंदर ग्रह, सूर्य, चंद्र, ये सारी उत्पत्ति, सारा क्रिएशन, पेड़ पौधे, फूल, हम सारी लाइव्स, ये सब उस बिग बैंग से क्रिएट हो गए। दैट्स व्हाट द साइंटिस्ट से। नाउ इज इट लॉजिकल और इलॉजिकल? It is absolutely illogical. So many of the scientists are opposing this, but some scientists are proposing this. Okay, but then when people who are believing in this theory
Are they not putting faith in this, blind faith in the science? एक बिंदु जिसको मैथमेटिकली वेरीफाई नहीं किया सकता है, प्रूव नहीं किया जा सकता है, उसके अंदर ब्लास्ट हुआ और उससे क्रिएशन हो गया, तो क्या हम उस पे फेथ नहीं कर रहे हैं साइंस पे? और जब आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में ऐसा बोला जाता है कि हाँ, एक ऐसी शक्ति है जहां से सब कुछ निर्माण हुआ है, हाँ, वो एक असीमित, उस शक्ति को मैथमेटिकली आप प्रूव नहीं कर सकते, आप फिजिकली उसको, आप फिजिकली दैट इज अनरिलायबल, है ना? उस, लेकिन उस बिंदु को जब हम भगवान बोलते हैं, when we say that there is God in control, then people do not want to believe, right? So it shows our bias. It shows our bias against spirituality and for science. Okay. So now, so Big Bang theory and chance theory, they are just theories. There are no proofs, and both are basically blind faith. They both require blind faith in science also. Okay. Then there is one theory called theory of evolution. So theory of evolution के बारे में हम कुछ समय के बाद हम discuss करेंगे. Okay. Okay. We had discussed this कि बहुत सारे laws हम देखते हैं universe में, right? Somebody is beautiful, somebody is handsome, others are not, somebody is rich, others are not, somebody gets nice opportunities in life, some people do not get the opportunities. So what are the laws which govern this kind of these kind of things in the universe, right? We choose so many things, but we do not choose our parents, beauty and intelligence. So who chooses and what basis? Can somebody answer this? Is what is the law which is working behind this kind of difference? Okay, there's something on the chat. What is that? Download 2.jpg. Is somebody trying to share something? I don't know. Please let me know if something is required from my side. Okay, I do not understand this comment. Yeah. It's just a photo of Isaac Newton. Oh, it's a photo of Isaac Newton. Okay, thanks. Yeah. I'll get to it. Okay. So what is the law of all these things which we talked about? Can somebody answer? कौन सा सिद्धांत है जो इसके पीछे चल रहा है? चांस नहीं है ये, हमें बाय चांस रिच पेरेंट्स या पुअर पेरेंट्स नहीं मिल सकते, बाय चांस हम इंटेलिजेंट या डम्ब नहीं हो सकते, राइट? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा, द कार्मिक रिएक्शंस, राइट? यू हैव हर्ड what you sow, whatever you sow, so shall you reap. Every action has equal and opposite reaction. जैसा बोगे वैसा पाओगे. So the karma theory talks about that. If we do good, good happens to us, good comes to us. If we do bad, bad comes to us. Now that may come in different lifetimes, right? इसके पीछे उसको समझने का भी हम करेंगे थर्ड सेशन में. We will discuss more on that, but that is a law behind it. Okay, so I'll just skip it. Most of the things we have discussed in the last time. Okay, so this is the verse which we have to discuss today. ये हमने last time नहीं किया था. The unseen is proven by seen. अगर आप में से किसी को पता करना है कि घर में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो कैसे पता करेंगे? Is there anyone who would like to put your finger in the electric socket and feel and taste the current and say that, yeah, now I know that the electricity is there? No? How do you say that electricity is there? By switching on the fan. Yeah, so how do you check whether electricity is there? By Yeah, testing. right. Thank you. By switching. Yes, we switch on the fan, we switch on the lights, and then we get to know, right? अभी करंट को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन करंट का इफेक्ट हम देख सकते हैं जब लाइट जलती है या जब पंखा घूमता है ना? Similarly, God is not visible in this world directly, but then the effect of God can be
seen. So there is a verse in Bhagavad Gita 7.7. मैं ये श्लोक को बोलता हूं, आप म्यूट पे रह के इस श्लोक को मेरे बाद में बोल सकते हैं स्लाइड पे रीड करके. मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव. So Bhagavad Gita talks about this verse. It tells us how to realize God, how to see God in this world. Now, anyone who has purchased a necklace very recently, or maybe not so recently, आजकल necklace खरीदना इतनी आम बात नहीं है, right? But if somebody या किसी ने देखा है necklace, जैसा necklace यहाँ फोटो में दिखाया गया है, anyone who has not spoken so far? I have seen this necklace in a movie. Oh, you've seen the necklace in the movie? No, I want a person who has seen the necklace physically. Gifted it to wife. Everybody? Everybody might have seen. Yeah, everybody might have seen. That's so Sharad, I'll ask you. I give you two choices. There is one necklace in which the pearls are very distantly arranged. हाँ, उसमें धागा आपको दिख रहा है, बहुत ऐसे pearls उसमें थोड़े से pearls हैं और धागा दिख रहा है. और एक ऐसा नेकलेस है जिसके अंदर धागा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है और बहुत सारे pearls उसके अंदर लगे हुए हैं. आपके लिए कॉस्ट कोई इशू नहीं है आपके लिए. आपके पास पैसे हैं इनफ कि आप खरीद सकते हो. तो which one will you like more? The necklace which is that pearl which are already been clearly arranged with string, because you will feel that yes, it is all joined together and cohesive and it has a shape. But if it is simply thrown up, but lot of pearls are there, it's of no use. It cannot be used. Just put that one. Yeah, thanks Sharad. Thank you. Yes, see, so बहुत अच्छी बात आपने कही शरद. That see, when the pearls are there, is the thread there in this necklace or only the pearls are there? The thread is there, right? One who looks at the thread, looks at the necklace, जो कोई भी necklace को देखेगा हमेशा उसको पता है कि ये necklace जो है इसके अंदर एक thread होगा, उसके ऊपर ये मोती पिरोए गए हैं. The pearls are there on the thread and that is why the pearls are together, है ना? अगर thread नहीं होगा तो सारे pearls बिखर जाएंगे, है ना? Similarly, so I don't have to see the thread. ध्यान दीजिए इस बात पे कि मुझे नेकलेस में थ्रेड दिखता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि थ्रेड होगा, क्योंकि थ्रेड नहीं होगा तो पर्ल्स साथ में नहीं रुक सकते. Exactly. So similarly, Krishna is giving this example to Arjuna in the Bhagavad Gita. Mai sarvam idam protam sutre mani gana iva. Krishna is saying कि जैसे एक पर्ल नेकलेस में एक थ्रेड होता है और थ्रेड के ऊपर पर्ल्स होते हैं, थ्रेड दिखाई नहीं देता, लेकिन पर्ल्स से आप समझ सकते हो कि थ्रेड है. वैसे ही इस संसार में मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम. इस संसार में देयर इज अ सुप्रीम पावर, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम गॉड हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग. सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन ही हाइड्स हिमसेल्फ. एवरीथिंग इज रेस्टिंग ऑन गॉड, एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय गॉड. तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि कोई तो सुपर पावर, कोई सुप्रीम बीइंग है. इसके कारण ही ये संसार बहुत अच्छे से टिका हुआ है अपनी जगह पे. So for example, most of you right now you are sitting on a chair, isn't it? So chair is taking support of what? Chair is taking I am taking support of chair. Chair is taking support of the floor. Floor is taking support of what? Can somebody reply? Floor is taking support of what? This earth only, on which yes, very good. Made. Yes, the floor is taking support of the pillars. Pillars are taking support of the earth. And what is earth taking support of? Certainly, it might be taking support of something. That is the hidden power, which you cannot see. Yeah, exactly. Lord.
Yeah. Lord. Is Yes, there that is somebody Lord. trying to speak? Earth is Yeah, speaking, sir. exactly. Yes, exactly. Thank you, Sharad. So see, like that, if logically we want to understand, we will see कि कोई ना कोई सुपर पावर है. अभी उसको अगर हम नजरअंदाज कर देंगे, उसको अगर हम आंखें बंद कर लेंगे, नहीं देखना चाहेंगे तो नहीं दिखेगा. जैसे एक छोटा बच्चा एक शॉपिंग मॉल में जाता है और एक वो ग्लास डोर, राइट? आई वाज इन पुणे, आई हैड गॉन टू इनऑर्बिट मॉल वंस विद माय फैमिली एंड माय सन वासुदेव, राइट? ही जैसे ही वो डोर के पास में आता था तो डोर अपने आप खुल जाता था, और डोर के पीछे जाता था, दूर जाता था, तो डोर अपने आप बंद होता था. तो ही केम टू मी एंड सेड कि देखो पापा, मैं मैजिक कर सकता हूँ. आई 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 देयर इज सम मैजिक आई नो. अच्छा, आई टोल्ड मी, टेल शो मी. आई टोल्ड हिम, शो मी व्हाट मैजिक डू यू वांट मी टू सी. हाँ, तो वो मुझे लेके गया उस डोर के पास में, वो डोर अपने आप खुल गया. दूर गए तो डोर अपने आप बंद हो गया, है ना? तो ही इज सेइंग इट इज मैजिक. बट व्हाट डू आई नो? There is a complex machinery working under the floor, over the roof, and which is hidden from these physical eyes. वो उसको मशीनरी को हाइड किया गया है. ओनली डोर्स आर विजिबल. सो जब डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, हम उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक. सिमिलरली इस संसार में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक हम बोल देते हैं कि नेचर में फ्लावर्स अपने आप आ जाते हैं, प्लैनेट्स अपने आप बन रहे हैं, सीजन्स आर कमिंग ऑटोमेटिकली, we are taking food and that is getting digested automatically. But everything requires a complex machinery. An intelligent person knows it, and that machinery is in control of God. Otherwise, who is controlling this machinery? Right? Okay, so now I would recommend that you can read Bhagavad Gita chapter 16. If you have Bhagavad Gita with you, chapter 16 verses and translation, to get some context on which this entire discussion is based, and 7.7 also. Okay, so let's move ahead. Hmm. So we are living in a universal government. Hmm. The way in our government of this country, we have home ministry, finance ministry, we have health ministry, and so on, water ministry, defense ministry. Similarly, there are ministries working around us in this universe. Hmm. So Ayurvedic herbs are there, which take Take care. Health. which take care of our health. Sharad, if you don't mind, I am Putting putting up you on my mute because there is mute it. No problem. Thank you. yeah. But there is no Thank sound in around me. Maybe disturbing you. You close it. No problem. Mute it. Yeah. I myself getting it You can muted. Yes. unmute. You can unmute when you want to speak, right? Thank you. Yes. So Ayurvedic herbs are there for medicines. We have for industrial and domestic water supply. We have municipal department. Similarly, our ocean water tank is there. Automatically, clouds come up in the rainy season. We get water everywhere in the world, right? And the clouds go away. Very easily, water is transported from one point to another without a complex pipeline. Social welfare ministry is there. So we have air, water, grains, milk, all these supplied from nature. Energy, sun and moon, energy is there. Finance ministry. Is somebody there in this group who is in banking domain? I am not there, but my brother is. Your brother is in banking domain. Okay, that's good to Yeah. know, Arushi. So you ask your brother when how the currency is, the paper currency which we use, right? The 100 rupees, 1000 rupees, 2000 rupees notes which we use, currency, how the currency is printed. There is a condition with which the currency is printed. RBI, before printing the currency, RBI has to put equivalent amount of gold in the treasury of India. The gold has to be put in the treasury of India, and then equal value they can print the money. If they don't follow this rule, then the devaluation of property or the money happens. So that means in the entire world, the currency जो हम धन है पूरे संसार में, उसका मापदंड सिर्फ आप गोल्ड, सिल्वर और ये डायमंड्स इन पे ही कर सकते हैं. And these are all made by nature. Man cannot made all these valuable metals, right? Health ministry is there.
So we have sun and rain, which maintain cleanliness, defense ministry, and we have our ozone layer, which is defense. Our body has natural defense mechanisms. Education ministry is there. So in the universal government, there are scriptures given, Vedas, Bible, Quran, other scriptures, right? And there are rewards of best citizens, the Padma Shri, Padma Vibhushan awards in the government of India. Similarly, universal government gives awards to good citizens in the form of when they live a good life based on yoga and meditation, then the life, they don't get diseases, their life quality improves, and so on. Okay, so basically the point is we need to bridge the gap between science and spirituality. Okay, and we need to become spiritual scientists. Huh? The spiritual scientist actually, what does he do? A spiritual scientist discovers the complexities of the world, and जब इस संसार में बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें समझ में आती हैं एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट को, तो उससे वो भगवान को, गॉड को और ज्यादा, उसमें गॉड में फेथ ज्यादा डेवलप करता है, गॉड और ज्यादा प्रिंसिपल्स सेंटर्ड लाइफ जीता है. So and then second thing which spiritual scientist does is कि यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, टेक्नोलॉजी और साइंस को यूज करके गॉड के प्रिंसिपल्स एंड मॉरल्स जो दिए गए हैं स्क्रिप्चर्स के द्वारा, उनको यूज करके लिव इंक्रीज द स्टैंडर्ड एंड प्योरिटी ऑफ लाइफ फॉर वन सेल्फ एंड अदर्स. So this is the duty of a spiritual scientist. Any questions so far? I had sent some videos on the group in the past week. I hope you have watched them. If you have not watched them, please watch them. They are very, very, very informative, and they are eye-opening videos. Once you watch these videos, your faith in God is going to surely grow manifold. Okay, so I'm going to jump into a next topic now, which is how do I see God, right? The moment I say that God is there, and we have points, logic to prove that, the next question when people ask is, show me God. How do I see God? Why God is not visible? All of you, do you have this question? So okay, nobody has this question. So then should we discuss or not? How do I see God? Of course, all of you might have this question. So we'll go one in this topic. And I'm going to ask you on this picture. Can you see my screen? Can you see an elephant on the screen? No, yes? Yes, Apuji, we can see. Okay. Okay, you can see. Thank you. Okay, Rajiv is saying thank you for last week videos as mentioned. Please share last week video recording of class. Yeah, last week's class recording was shared on a YouTube link on this group, on the WhatsApp group. I had sent it. I will send it again if required. Okay. But I'm talking about the other short 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes videos, which are the things which we did not directly discuss in the class, like things like how the universe is working. ये universe, how the earth, जैसे मैंने आज एक वीडियो भेजा है, अर्थ पे लाइफ सस्टेन करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए साइंटिफिकली, और how this is a miracle which is going on every day. And I will keep share more videos. Okay, now can somebody explain what is going on in this picture? There are 6 blind men. Okay, in a village there lived 6 blind men. 6 अंधे व्यक्ति थे, एक गांव में रहते थे. उस गांव में एक हाथी आया, और इन 6 व्यक्तियों ने, अंधों ने, कभी हाथी देखा नहीं था. Something on the chat.
ओके, हाँ, एक हाथी इन्होंने कभी देखा नहीं था, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम जाके चेक करें हाथी कैसा होता है, हमें जानने की इच्छा है हाथी कैसा होता है। तो ये 6 के 6 गए हाथी के पास और हाथी को उन्होंने टच किया। तो अभी आप एक इस पिक्चर में देख रहे हैं कि देयर आर 6 पीपल, ऑल ऑफ देम आर ब्लाइंड एंड दे आर टचिंग द एलिफेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। और उन 6 अलग अलग जगहों को टच करने के बाद में उन्होंने कुछ कुछ उनको निष्कर्ष वो निकाल रहे हैं कि हाथी कैसा होगा। सो पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द एलिफेंट, उसने हाथी के कानों को छुआ, उसको लगा कि ये शेप तो कुल्हाड़ी जैसी है, मतलब हाथी जो है वो कुल्हाड़ी जैसा होता है। किसी ने हाथी के पूंछ को छुआ, उसको लगा हाथी एक रस्सी के जैसा होता है। किसी ने पैर को टच किया, उसको लगा हाथी पेड़ के जैसा होता है। हाँ, किसी ने सोचा हाथी एक तीर के जैसा होता है, किसी को लगा हाथी एक सांप के जैसा होता है, किसी को लगा हाथी एक दीवार के जैसा होता है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या हाथी एक कुल्हाड़ी, एक पेड़ या एक रस्सी या इनमें से कोई भी एक वस्तु है? हाथी इनमें से कोई भी एक चीज होता है? नहीं। नहीं होता है। वेरी गुड। अच्छा, तो क्या हाथी इन छह के छह चीजों को मिला के कुछ होता है? नहीं। नहीं, वो भी नहीं होता। तो ये 6 के 6 लोग जो अंधे हैं, ये कैसे जाने कि हाथी कैसा होता है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? Feelings. कैन समबडी टेल मी? Feelings. फीलिंग्स? Yes. नो, दे आर फीलिंग इट ना। With their feeling they have come up to this conclusion that the elephant is a tree. So now what is the solution? Hmm? Okay, so you think about it and we will get. Open your eyes. Open your eyes and you can see it's an elephant. Okay, open your eyes. That is Mustafa, right? Yes. Yeah. लेकिन वो अंधे हैं, they are blind, they cannot open their eyes. त्यांनी माझ्यावर बोलल्याने ठेवले. Is that Deepak? You want to answer something? No. हाँ, तो वो अंधे हैं, उनको नहीं पता चल सकता अपने आंखों से तो कि वो हाथी कैसा है। फील उन्होंने करके देख लिया। ठीक है, हम इसका उत्तर डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। मैं आपको एक और प्रश्न पूछता हूं, आप में से कोई, एवरीवन इज ए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, राइट? कोई इंजीनियर है इस पूरे फोरम में? एनीबॉडी हु इज इंजीनियर और अ डॉक्टर? My father is doctor. Who spoke? Mustafa. Okay, who is a doctor? Okay, somebody is a doctor in his family, Mustafa's family. तो कितने साल लगते हैं एमबीबीएस या और एमबीबीएस करने के लिए? कोई बता सकता है? 5 साल। 5 साल लगते हैं। अच्छा, एमबीबीएस करने के लिए 5 साल लगते हैं। इंजीनियरिंग करने के लिए कितने साल लगते हैं? 4 साल लगते हैं। 4 साल। एनी अदर काइंड ऑफ ग्रेजुएशन, बीएससी, बीकॉम, ये सब करने के लिए कितने साल लगते हैं? 3 साल लगते हैं। बीएससी 3 साल, हाँ, एमबीए लेकिन 2 साल। एमबीए 2 साल, लेकिन ये उत्तर सारे के सारे गलत हैं। ये सारे के सारे उत्तर गलत हैं। कौन मुझे बता सकता है कि कितने साल लगते हैं एक बीएससी करने के लिए? 3 साल लगते हैं या ज्यादा लगते हैं? इट इज इंपॉर्टेंट, ज्यादा आई एम लगते गिविंग यू हैं। टाइम टू थिंक। कि ज्यादा लगते हैं? कितने ज्यादा लगते हैं नीता? 12 years more. 12 years more. Around 15 How? years complete. Since How we were 15 years? born. We'll take it since we were born. Yes, yes, very nice, very right answer. हाँ, ग्रेजुएशन करने के लिए 3 साल नहीं लगते केवल, ग्रेजुएशन तक पहुंचने के लिए 12 साल भी हमने पढ़ना पड़ता है। हाँ, पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक। उससे पहले हमें केजीज, नर्सरी, किंडरगार्टन, इन सब में पढ़ना पड़ता है। तो कुल मिला के 12 + 3 15, 15 से पहले किंडरगार्टन के 3 साल, 18 साल। 18 साल हमें लगते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए। और तब भी हमें सब कुछ आता नहीं है, हमने जो ग्रेजुएशन में स्टडीज किए हुए होते हैं। हमने आध्यात्मिकता को जानने के लिए हमने कितना साल स्टडी किया है?
हमने कितने साल भगवत गीता, कितने मिनट हम दिन में बिताते हैं भगवत गीता को खोल के भगवत गीता पढ़ने के लिए, या हमारे दूसरे अगर हम रिलीजन्स फॉलो कर रहे हैं कुरान को पढ़ने के लिए या बाइबल को पढ़ने के लिए, आर वी स्पेंडिंग एनी टाइम टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी और गॉड? And without spending time, we say that there is no God. If God is there, please show me. We are very, very There is- biased. We Yes. are very, very we can biased look at against. the universe. We can look at the universe and see how wonderful it is, and it is very perfect. We can look at the solar system and know the planets are not touching each other. They are in a perfect harmony, and so we can understand Yes. Allah is real from here. Yes, yes. Thank you. Yes, Mustafa. Thank you. Yeah. Yeah, we discussed all these points in the last week. But the point I'm making is we are so much biased against spirituality, against scriptures, कि हम उनको बिना हाथ लगाए, हम बिना कोई मेहनत किए हम बोलना चाहते हैं कि there is I don't want to believe in the religion, I don't want to believe in God, which is very, very problematic in this world. That is why we are seeing so many problems in the world today. Okay. So I'll ask you another question. Let us say that most of you are maybe in Pune. I was in Pune some days back. Now in my hometown, Rajasthan. Okay. So let us say that आप weekend पे, there is no COVID around, और आप weekend पे expressway पे, पुणे मुंबई expressway आप full speed से जा रहे हैं लोनावला खंडाला. ओके. और रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है. गाड़ी आपकी खराब हो गई और आप लेट्स से एक इंजीनियर हैं, एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपको पता है सब ऑटोमोबाइल वगैरह गाड़ियां कैसे डिजाइन होती हैं, कैसे फंक्शन करती हैं, यू नो एवरीथिंग. हाँ, लेकिन फिर भी गाड़ी जब खराब हो जाती है तो आप कहीं से एक नंबर निकालते हैं, गूगल से नंबर निकालते हैं, फोन करते हैं, और एक मैकेनिक आता है और वो बोनेट खोल के कहीं पे टच करता है 2 जगह पे और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, चल जाती है. आप पूछते हो मैकेनिक को कि आपका कितना पढ़े लिखे हो, सो द मैकेनिक सेज दैट आई एम 5th स्टैंडर्ड फेल. मैं 5वीं कक्षा में पास नहीं हुआ, फेल हो गया था, उसके बाद से काम करने लगा. सो व्हाट इज इट इन द मैकेनिक कि मैकेनिक वो हमसे कम पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी वो गाड़ी स्टार्ट कर सकता है, हम नहीं कर सकते. सो ऐसा क्या है जो मैकेनिक कर सकते, ऐसा क्यों है कि मैकेनिक कर सकता है और हम नहीं कर सकते? व्हाट डज द मैकेनिक हैव? कैन समवन आंसर दिस क्वेश्चन? Okay. Experience of his work which we don't have. Okay, experience. Okay, experience is there, but still experience is not the right word for that. Expertise. Expertise. Hmm. Okay, can I call it qualification? Of course, with his he has learned a skill. Okay, and he has learned a skill. He has got trained under somebody, और वो स्किल को उन्होंने ट्रेनिंग लेके मास्टर करके उन्होंने क्वालिफिकेशन अपना बनाया है that he can take any vehicle and he can repair it, he can switch it on, है ना? क्वालिफिकेशन के कारण वो कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते, ऑल्दो हमें नॉलेज उनसे, मटेरियल नॉलेज उससे ज्यादा है ना? सिमिलरली देखिए, गॉड ये जो सब्जेक्ट है, इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि क्वालिफिकेशन चाहिए इस सब्जेक्ट को समझने के लिए भी. एक सिंपल सी कार जो एक बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है इस संसार का, उसको समझने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, उसको चलाने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए. तो गॉड जो है वो इस पूरी सृष्टि को, दिस एंटायर यूनिवर्स इज गेटिंग कंट्रोल्ड बाय गॉड. क्या उनको समझने के लिए वी डू नॉट नीड एनी क्वालिफिकेशन? We can quickly say that okay, agar God is there, then you please bring God in front of me, then I will believe. It is very unfair question, right? We have not spent any time in spirituality. 15 years, 18 years we have spent time in getting the degree, but we have not spent time in spirituality. And we have not also gotten the qualification to see God.
So a very famous saint, Bengali saint in India, he has said, "Ki don't try to see God from your eyes. Try to do such things. Try to gain that qualification that God wants to see you." भगवान को देखने की कोशिश मत कीजिए, अपने ऐसे काम कीजिए, इतना योग्यता आप प्राप्त कीजिए कि भगवान आपको देखना चाहें. स्टिल देर आर, हाउ डू वी सी गॉड, हम भगवान को कैसे देखें, उसके लिए हम आगे जाते हैं अपने डिस्कशन में. आई विल टेक, ओके, सो this is 6 o'clock. We started around 5:10, 5:15. I'll go 15 minutes more and then we will stop the discussion, and remaining part of the discussion I will take in the next week. ठीक है? Because ये टॉपिक जो है हाउ टू सी गॉड, ये आधा अभी हुआ है और आधा हमें नेक्स्ट टाइम करना होगा. ओके, सो हम इस संसार में जितना भी ज्ञान अर्जित करते हैं, whatever knowledge we derive in this world, there are three types. In three ways we gain knowledge. One is called प्रत्यक्ष प्रमाण, second is called अनुमान प्रमाण, and third is called शब्द प्रमाण. तो हम देखते हैं, so any kind of knowledge we derive in this world, उनको हम ये थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वो कैसे, अभी हम आगे चलते हैं उनको समझते हुए कि एक एक क्या है, हम उनको डिस्कस करेंगे. सो भगवान के बारे में कैसे जाने, एज द भगवान, the God is the greatest artist, he's the greatest designer, he's the greatest lawmaker and organizer and controller and supreme proprietor. How to gain knowledge about God in these three ways? So let us see. Pratyaksh Praman is the first way. It is called direct perception in English. Direct perception मतलब मैं अपनी इंद्रियों से जो भी नॉलेज लेता हूँ उससे सीखता हूँ, उससे मुझे लर्निंग मिलती है. So how many senses we have? Anyone? We How have many five knowledge senses. acquiring senses? We have 5 senses. Yes. Thank you, Mustafa. I would request others also to speak for better participation in the class. Okay. People who are not, who have not spoken so far, I want to give them a chance also. So we have 5 knowledge acquiring senses. कौन कौन से हैं? हमारी इंद्रियां कौन कौन सी हैं जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं? One is eyes, है ना, हम आंखों से देख के ज्ञान अर्जित करते हैं. ये हरा है, ये लाल है, it is green, red, black, yellow, white. This is big, this is small, right? This is a triangle, this is a square. All this we get from eyes. फिर ears, आंखें, eyes, ears, nose, tongue, and skin, right? The skin is also knowledge acquiring sense. ये 5 इंद्रियों से, in those 5 senses we acquire knowledge, right? तो प्रत्यक्ष का क्या मतलब है? प्रति प्लस अक्ष इस प्रत्यक्ष इन संस्कृत. कि हमारे अक्ष मतलब सेंसेस, हमारी इंद्रियां, और प्रति मतलब सेंसेस के सामने या सेंसेस के टच में जो आता है वो प्रत्यक्ष. तो हमारे सेंसेस के डायरेक्ट टच में जो आता है उनको हम, उससे हम लर्निंग अक्वायर करते हैं. लेकिन क्या हम रिलाय कर सकते हैं हमारे सेंसेस पे 100%? Whatever I see, can I believe it? Is seeing believing? So there is No, we cannot. Sorry to interrupt you. We cannot believe everything because our brains are playing games on us because they are optical illusions. Yes. No, Very good. stop lying. But there is. No. For example, you watch anime. You watch anime. You see everything. It's not real. You think it's real. No. Yeah. So yeah. Thank you, Mustafa. And who's the He's other person? distracting. I could not get the He's name. distracting the class. He's distracting the class. Okay, I'm sorry for that. So, but Yeah, but he's what he spoke is distracting right. the class. But it's That's okay. distracting. Okay. So I will take the What class. is wrong? No, that's okay. Let's not get into Yeah, he's a debate annoying. right now. Let us follow the discussion which is happening in the slides. Okay, he needs to behave. Thank you. Thank sorry. you, Mustafa, for your input. Thank you, I Mustafa. am so sorry. Yeah. You don't have to be sorry. I did not mind that. Thank you for your input. Okay. So whatever we see, we cannot believe it 100%. Okay, because
this is jar which is on the picture, right? This famous optical illusion which we teach our children in the class. You put a straw in the water, and the straw looks bent on the surface of the water, right? Yes. Yeah. Who's speaking? Sometimes, not all the time. Sometimes. Right. Okay, sir. Yeah. So, no, there's somebody else who is speaking. I'm not able to understand. Okay, SV with the name SV. I'm putting you on mute. Okay. Thank you. Yes, and the lady who has logged in as Zoom user. Yes, what you said is right. Not all the time, but sometimes yes. So I'm saying that we cannot believe on our whatever our eyes perceive 100%. We can believe it sometimes. We cannot believe on it all the times. Okay, we cannot understand. See, our senses, all of these senses have 4 defects. Okay, our senses are defective. Hmm? Our senses are imperfect. They do not give us the full information about whatever we see or perceive. Second is our senses get illusioned. Okay, very easily. We'll see the examples. Then we have a tendency to commit mistakes because of lack of information and lack of visibility. We commit mistakes, and then there is something. The fourth problem is cheating propensity. When we commit mistakes, we try to hide those mistakes. That is a human nature, right? So I'll give you this example. Hmm? You see the spectrum in the bottom of the slide, right? VIBGYOR, the 7 colors of the light. When the light passes through the prism, we see the 7 colors. So the light is made up of 7 colors, right? The violet to red, right? So whatever is beyond red, infrared rays are there, and ultraviolet rays are also there. Our eyes can see only the 7 colors. We cannot see the frequency, the wavelengths of the light which are beyond this spectrum. But that does not mean that the waves do not exist beyond that spectrum. We have science has discovered so many rays called alpha rays, gamma rays, X-rays, right? When we have this bone problems, we go for an X-ray. So that means we do not see the X-rays, but we see the imprints of our bones on a sheet. So that means X-rays are there, right? So our eyes are incapable to perceive information outside this range of colors, right? So our eyes are blind outside this range. Similarly, our ears are also deaf outside the range of 20 hertz to 20 kilohertz. Okay. In what respect? Yes, Mustafa, what's the question? I was going to say in what spectrum we can see God. That is Okay, the we will dumbest get there. question We will get there. I've ever heard in my life. No, wait. Okay, okay. Wait. Let's not attack each other. Let's respect one another's opinions. I'm sorry, and but perspectives. what kind of a question is that? That was That's- a terrible question. I'm That is sorry. okay. What's your name, Zoom user? What's your name, ma'am? I don't want to call you Zoom user again and again, so I'm just asking your name, if that's okay. Okay, if it's fine if you don't want to reply. Yeah. So right now we are taking examples of the things we see in this world, okay, which are in front of us. Are we able to derive full information about this world, about the objects around us, fully by using our senses? That's what we are trying to discuss here. We will get to the topic of God after this. Okay, how do we see God? So if we cannot see things in this world properly, if we cannot hear the frequency in this world properly, then God is something beyond. God is a supernatural power, right? Which we have to understand. So we cannot rely on our senses to see God. That's the premise here which we are talking. Okay. So about this frequency range, right? There are some animals who can see
colors beyond this range. Have you heard about this? Wait, there are Um, some animals that can see God? I did not. No, I'm not mentioning that. I'm saying that there are some animals who can see beyond this range of colors, right? Yes, listen to I'm the not teacher. saying that the God is. Oh, Uh, hey. I'm not saying that God is made up of something which is beyond these color spectrum. No, Oh, I'm saying we will get to the topic of God. Just wait. Right now, we are trying to build our understanding. Can I rely on our sense? Can we rely on our senses to understand the things which are there in this world? Okay, around us. So, have you heard about this? That the cock, right? Cock. हिंदी में उसको मुर्गा बोलते हैं हम. Cock. Hen and cock, right? So cock, And when then the cock. sunrise is, yeah, the sunrise is happening, the cock is the first animal which gets to know about it, and the cock starts you know, whatever we call the voice of cock, quacking or something, right? uh, हम हिंदी में in Indian language we say कुकड़ुक्कू, मुर्गा बांग देता है. So everybody is sleeping, the sky is still dark, right? But the cock starts getting this the cock can see the ultraviolet rays. उससे उसको पता चलता है, cock can know that the sun is coming up. The birds start flying out of the nest and they start chirping. Then another example is dogs. Dogs can hear. There are some whistles which come in the market, right? Ultrasonic whistles. There are ultrasonic planes also. We cannot. So when these whistles are blown, we do not hear the sound, but the dogs can hear that sound. Okay, so that means our we cannot, the things which there are things which exist outside the purview of our senses. Okay, so our senses are imperfect, and somebody may say that we will create instruments by which we can we can capture something which our eyes or ears cannot capture. So we can take the photographs of the stars, right? But then the stars and the sun and the moon, right? There are so many, the distance is so much between the stars. The distance is measured in the light years, in the measurement of light years. That the amount of distance light has traveled in 1 year. Now speed of light is 3 into 10 power 8 meters per second square. That is 0.3 million kilometers kilometers per second. Okay, that is the speed of light. So in 1 year, light will travel millions of kilometers, and the stars are that much distant. If I see a star with a telescope, or if I picture a star, the picture will be, I will be taking the picture because the light is coming from that star from so much distance. That means that the light, it will take some amount of time for the light to reach the telescope, and in that time the star may have moved ahead, or my planetary position may have moved ahead. So even if I make some calculations based on my observations, my calculations will always be behind, because the light has taken so much time to travel from so far, right? Okay, our senses become illusioned very easily. Our tongue is a sense again. Okay, if we eat orange after we eat sugar, the orange tastes sour to us. If we taste orange after tasting a lemon, it tastes sweet to us, right? The same tongue is the same orange, but we get a different taste in these two scenarios. Okay, similarly our skin. If we have the two vessels, warm water and the cold water, same hand, in different chronological order, we put our hand in the water, the normal water will appear warm or cold. Okay, so our senses become illusioned. Now, can somebody tell me, in the first picture on the top left corner, what do you see? I see a square. Sorry, triangle.
You see a triangle. I see a Very circle. good. I see Pac-Man. I like playing Pac-Man. You see Yes, circles. see a Okay. triangle. Somebody sees triangle. Illuminati. Triangle. I see Look at the Pac-Man. triangle. Pac-Man. I don't know what is that. Pac-Man is a There is video game. Illuminati. Pokemon. Okay, it's a video game. It's a video game. Okay, I'm Pokemon. sorry. I'm not into video games, so I don't know. Yeah, thank you. Thank you. Why? Most people. You should play video games. Pac-Man is so fun. Fun, Okay. fun. Okay. I will Okay. try sometime. Thank you. Yeah, but most people will see a triangle here in the first picture. But actually, the definition of triangle is that it should have 3 sides. But here, this triangle does not have 3 sides. There are only 3 partial circles which are arranged in this way, and we are getting an illusion of a triangle. Okay, so it's an example. I'm just sharing some examples that our eyes do not show us the exact information. Sometimes we get illusioned. Okay, so without looking at the picture, tell me, in the world around you, what have you observed, or what do you know which you see but you know that you should not believe it? Any examples? And after that we will close today's discussion and we will meet next week. I want to hear from you, so I will move the slide back again. I will tell you something. When we are in dark, can I talk? No, wait. I want to hear from somebody else now, because there are others also. I want to give a chance to everyone to speak. If that is okay, Mustafa. Okay, maybe Zoom Okay. Zoom can talk. Zoom can talk. She is What? very intelligent. Let's not attack each other. I request. It's my humble request to all of you. Let's not attack each other. Okay. Thank you. Thank you very much. Oh. Yes. Somebody What else. was that clown saying? I didn't understand. What was the clown saying? Please do not use foul clown. language. Otherwise, I will have to close the call early. The other people will also not get benefited. Okay. I request you both to please listen. Please listen. Yeah. Carefully, and also please What? have your patience. Yes. Listen. This topic. Okay. will be I'm discussed. putting Everybody into mute. into Hey, please calm down. Please calm down. Please. Yeah. Is there anyone else who want to speak? Things you see in this world, but you know that you should not believe it. Have you seen magic shows? Yes, every one of us has seen magic shows, right? Some magic tricks we have seen. Yes. Yeah, okay, there's something on the chat. Yes, we have seen the magic shows. Yeah, so when we see the magic show, do we believe that this person, this magician, is creating money out of paper? No, there are some tricks he's using. He's using some illusioning on us, with which we believe that there is something coming out, the currency is coming out of the paper. Similarly, have Like you sky is It's appears witchcraft. to be blue, but actually it is a dark black. In the sky we see in the okay? morning. Yeah, the sky. It is Yeah, because okay. of scattering Nobody of the asked. sunlight. Nobody asked. Okay. Yeah, the sky, the colors are, the sky shows different colors based on what is going on in this. Yeah, dust particles. Also, and for example, Zoom person might be wearing makeup and she looks beautiful. I am putting you on mute, okay, Mustafa? No. And I am Yeah. putting you on mute, okay, Zoom Can user. I give Why? an example? Why? Example? Yes. Example? No, nobody wants to listen to your example. You're a clown. Please stop. Okay, Please. I Stop have distracting us. Please stop distracting us. I'm sorry, but okay, I have muted everyone. Thank you very much for joining. Thank you for your participation. I request again, please do not, this is not a platform to fight. If you want to fight amongst each other, please exchange your numbers, please exchange your addresses, and you can go and fight. This is not a platform. We are discussing a subject here, and all of you have shown interest, and that is why we have come here. So let us make use of this time. Okay. So last example I'll share and then we'll close. When you drive your vehicle on a hot summer day on
road, right? Across a distance, we see water. Very often we see water on the road, right? But do we believe that water is there? It's called mirage, right? It's called mirage. So we do not believe that water is there. And so many people in the history have died in the deserts when they could not get when they could not find ways to get out of the desert. They have died because they were looking for water in the desert. They were seeing water, and when they go there, the water is not there. Okay, so our senses get illusioned. So the thing is, we cannot rely on our senses to understand the what is going on in this world, the understand the full information about this world. हम अपनी इंद्रियों पे भरोसा नहीं कर सकते इस संसार में जो भी चल रहा है उसको पूरी तरह से जानने के लिए. तो जब इस संसार की हम इंफॉर्मेशन सूचना पूरे ढंग से नहीं ले सकते हैं हमारे इंद्रियों से with our senses, then why do I want to rely on my senses to gain knowledge about God? Okay, so this premise is itself wrong. हमें we should not count or we should not have faith on our senses कि हम आंखों से हमें गॉड दिखना चाहिए या हमें कानों से गॉड सुनाई देना चाहिए तभी मैं गॉड पे भरोसा करूंगा, तभी only then I will have faith in God. That is a wrong premise. Okay, that's what we have discussed today. Thank you very much. If there are any questions, there is a big fight which is going on on the chat. Okay, so let us close the call. I hope this discussion has been fruitful for you. I thank you once again for joining. We will meet in the next week, Sunday, same time, and we will finish this topic and we will discuss theory of evolution in detail. Okay, theory of evolution has some fundamental flaws and many scientists have discarded it. Why they have discarded it? What is the alternate theory? How do I gain? What is the perfect way of gaining knowledge about God with which I cannot be illusioned? Was everything we will discuss in the next class. Okay, thank you very much. I appreciate your patient hearing. Have a good day. Have a good week ahead, and bye bye. I will share the YouTube link for this class for those who have missed it.